optimism, government's continued thrust on capex, and healthy balance sheets of banks and corporates. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 24-25 is projected at 7.2%, with Q2 at 7%, Q3 at 7.4%, and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 25-26, is projected at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Now, as anticipated, headline inflation softened significantly in July and August, with base effect playing a major role in the month of July. Food inflation experienced a certain degree of correction during these 2 months. Considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. Now, whatever I am saying, I have given a lot of data in the footnote of my statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after my statement is, immediately after I complete my statement. For example, I just now said that considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. So this is backed up by the data which I have given in the footnotes. And in fact, all the statements that I am making are backed up by supportive data there in the footnotes. So those of you who are interested may like to have a look at them after it is uploaded. Now, deflation in fuel group deepened on softening electricity and LPG prices. Core inflation, on the other hand, edged up in July and August. The CPI print for the month of September is expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pick up in food price momentum. And this would be caused by the lingering effects of a shortfall in production of onion, potato, and chana dal, that is gram, in 2023-24, among other factors. The headline inflation trajectory, however, is projected to sequentially moderate in Q4 of the current financial year due to good kharif harvest, ample buffer stocks of cereals, and a likely good crop in the ensuing Rabi season. Unexpected weather events and worsening geopolitical conflicts continue as major upside risks to inflation. International crude prices have become volatile in the month of October, that is in the current month. The recent uptick in food and metal prices, and this is very important, the recent uptick in food and metal prices as seen in the FAO, that is Food and Agricultural Organization, and the World Bank price indices for September, if sustained, can add to the upside risks to CPI inflation. Taking into account all these factors, CPI inflation for 2024-25, that is for the current year, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.1%, Q3 at 4.8%, and Q4 at 4.2%. CPI inflation for the first quarter, that is Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 4.3%. The risks are evenly balanced. Now, I have summarized our assessment of the domestic growth and the inflation conditions and the outlook as per our assessment. Now, what do this raises the question, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? The developments since the last meeting of MPC in August indicate further progress towards realizing a durable disinflation towards the target. Despite the near-term upsides to inflation from food prices, the evolving domestic price situation signals moderation in headline inflation thereafter. The agricultural crop outlook is turning out to be favorable, with improving prospects of Kharif and Rabi output.
These factors could lead to an easing of food inflation pressures, but this optimism is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions, unless, of course, there are surprises in global commodity prices. The prevailing and expected inflation growth balance, please mark my words, the prevailing and the expected inflation growth balance have created congenial conditions for a change in monetary policy stance to neutral. Even as there is greater confidence in navigating the last mile of disinflation, significant risks, I repeat, significant risks to inflation from adverse weather events, accentuating geopolitical conflicts, and the very recent increase in certain commodity prices continue to stare at us. The adverse impact of these risks cannot be undermined, cannot be underestimated. It's with a lot of effort that the inflation horse has been brought to the stable, that is closer to the target within the tolerance band compared to its highest or heightened levels 2 years ago. We have to be very careful about opening the gate, as the horse may simply bolt again. We must keep the horse in tight leash so that we do not lose control. Going forward, we need to closely monitor the impulses. I would now like to turn to the liquidity and financial market conditions. System liquidity remained in surplus during August and September, and also in early October, with a pickup in government spending and decline in currency in circulation. Liquidity conditions, however, had turned into deficit for a brief period during the latter half of September, with the buildup of government cash balances on account of tax-related outflows. In sync with the shifting liquidity conditions, the Reserve Bank proactively conducted two-way operations to ensure alignment of interbank overnight rate with the policy repo rate. Across the term money market segments, the yields on 3-month treasury bills, that is T-bills, and commercial papers issued by non-banking financial companies, that is NBFCs, eased, while that on certificates of deposits firmed up marginally. The 10-year G-Sec yield softened in August-September on global and domestic cues, including policy pivot in the United States and also in some major economies. And also, these are not the only factors, but the yields in August-September, I'm talking about the 10-year G-Sec yields, they softened somewhat in August and September due to multiple factors, which would include pivot in the monetary policy of the US and some major economies, improved global investor sentiment, benign domestic inflation, and accelerated fiscal consolidation. The term premium, that is 10-year G-Sec yield minus 3-month T-bills yield, has remained stable in the recent few months. Transmission to the credit market has been satisfactory. Moving forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During the current financial year, that is up to 8th of October, that is till yesterday, the exchange rate of the Indian rupee has remained largely range-bound. The Indian rupee also continued to be the least volatile among peer EME currencies. This was so even during the high volatile episode following the unwinding of the yen carry trade in early August this year. The lower volatility of the Indian rupee reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improved external sector outlook.
I would now turn to financial stability. The health parameters of banks and NBFCs in India continue to be strong. There has been some recent commentary on the likelihood of stress build-up in a few unsecured loan segments like loans for consumption purposes, microfinance loans, and credit card outstandings. The Reserve Bank is closely monitoring the incoming information and will take measures as may be considered necessary. Banks and NBFCs on their part need to carefully assess their individual exposures in these areas, both in terms of size and quality. Their underwriting standards and post-sanction monitoring have to be robust. Continued attention also needs to be given to potential risks from inoperative deposit accounts, cybersecurity landscape, mule accounts, and a few other factors which we have been stressing and highlighting time and again in the public domain as well as in our interaction with the banks and NBFCs. Now, overall, I would again like to stress that our banking and the NBFC sector, that is the financial sector, remains healthy, resilient, and stable. NBFCs in particular have registered an impressive growth over the last few years. This has resulted in more credit flow to remote and underserved segments, bolstering financial inclusion. While the overall NBFC sector remains healthy, let me re-emphasize, while the overall NBFC sector remains healthy, I have a few messages to certain outliers. First, it is observed that some NBFCs are aggressively pursuing growth without building up sustainable business practices and risk management frameworks, which should be commensurate with the scale and complexity of their portfolio. An imprudent growth at any cost approach would be counterproductive for their own health. Second, driven by significant accretion to their capital from both domestic and overseas sources, and sometimes under pressure from their investors, some NBFCs, including microfinance institutions and housing finance companies, are chasing excessive returns on their equity. While such pursuits are in the domain of the boards and managements of NBFCs, concerns arise when interest rates charged by them become usurious and get combined with unreasonably high processing fees and frivolous penalties. These practices are sometimes further accentuated by what appears to be a push effect as business targets drive retail credit growth rather than its actual demand. I am not generalizing it for the whole NBFC sector. There are certain NBFCs where it is happening. Bilaterally, we are engaged with them, but I think this is a message which it's important not only for these outliers to keep in mind, but I think this should act as a guidance for the entire sector. Now, the consequent high cost, I was talking about the push effect, that is business targets driving retail growth rather than its actual demand. In that context, I would like to say that the consequent high cost and high indebtedness could pose financial stability risks if not addressed by these NBFCs in time. Third, NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay, and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. Coming to external sector,
India's current account deficit, that is CAD, widened to 1.1% of GDP in the first quarter of this financial year, that is 24-25, and this was on account of higher trade deficit. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within the sustainable level. On the external financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a turnaround from the net outflows of $4.2 billion in April and May this year. They have turned from net outflows. In April and May, we had net outflow of $4.2 billion. Now they have now turned to net inflows of $19.2 billion during June to October, and this is the figure till 7th of October. Foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong in 24-25, as both gross and net FDI flows have improved in April and July. While external commercial borrowings moderated, non-resident deposits recorded higher net inflows compared to last year. India's foreign exchange reserves have already crossed a new milestone of $700 billion. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. And when I say key external sector vulnerabilities continue to improve, I have backed it up by the data in the footnote of the statement. On the whole, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures. The first relates to responsible lending conduct, levy of foreclosure charges, and or prepayment penalties on loans. The Reserve Bank has taken several measures over the years to safeguard consumer interest. As part of these measures, banks and NBFCs are not permitted to levy foreclosure charges or prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned to individual borrowers for non-business purposes. That is, for purposes other than business. It is now proposed to broaden the scope of these guidelines to include loans to micro and small enterprises, that is MSEs. A draft circular in this regard shall be issued for public consultation. The second announcement relates to discussion paper on capital raising avenues for primary urban cooperative banks, that is for UCBs. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the UCB sector. Such initiatives include issuance of regulatory guidelines in 2022 for issue and regulation of share capital and securities by the urban cooperative banks. To provide more flexibility and avenues to the UCBs, that is urban cooperative banks, to raise capital, a discussion paper on capital raising avenues for UCBs will be issued for feedback and suggestions from stakeholders. The third announcement relates to creation of Reserve Bank Climate Risk Information System. Climate change is emerging as a significant risk to financial system world over. This makes it necessary for regulated entities to undertake robust climate risk assessment, which is sometimes hindered by gaps in high-quality climate-related data. To bridge these data gaps, the Reserve Bank proposes to create a data repository, namely the Reserve Bank Climate Risk Information System, or in short RBCRIS, Reserve Bank Climate Risk Information System, that is RBCRIS. The next announcement relates to UPI, where we are enhancing certain limits for the various transactions. UPI has transformed India's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive through continuous innovation and adaptation. To further encourage wider adoption of UPI and make it more inclusive, it has been decided first to enhance the per transaction limit. To enhance the per transaction limit
in UPI 123 Pay from rupees 5,000 to rupees 10,000. And second, it has also been decided to increase the UPI Lite wallet limit from rupees 2,000 to rupees 5,000 and per transaction limit from rupees 500 to rupees 100. The final announcement relates to introduction of beneficiary account name lookup facility. Let me explain what it means. At present, UPI and Immediate Payment Service, that is IMPS, provide a facility for the remitter of funds to verify the name of the receiver of the funds, that is the beneficiary, before executing a payment transaction. It is now proposed to introduce such a facility for RTGS as well as the NEFT systems. This facility will enable the remitter to verify the name of the account holder before effecting funds transfer to him or her through RTGS or NEFT. This facility will also have the effect of reducing the possibility of wrong credits and frauds. Let me now conclude. Today, the Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates हाँ, मैंने उस दिन आज तक से अंजना ओम का मेरा तो हो जाएगा काम शाम तक इतनी नहीं ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए हैं, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। मायावती
ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाया। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 15% वोट बैंक से घटकर 1% पर आ गया। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाया। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और ख़ास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने
करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूँ। आपका की जीत है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की हार है और सत्ता की संगठन की जीत है, और साथ में वो यह भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं इशारों में ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूँगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में दो राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही, वहाँ ना तंत्र, वहाँ सिर्फ लोकतंत्र। और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं, वहाँ पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी, तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। दिक्कत यह है कि लोग आत्ममंथन नहीं करते। इस चुनाव के बाद भी हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, तैयारी उसकी की जा रही है। ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है, किसको दोष देना है, इस बात की तैयारी की जा रही है। वो आत्ममंथन नहीं किया जा रहा कि अंतर कलह क्या इसका कारण है, क्या लोगों के बीच सही मुद्दों को लेकर जाना क्या इसका नहीं लेकर जा पाना क्या इसका कारण है। इसका मंथन जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। नामों को कैसे देखते हो?
देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे कि कांग्रेस एक बड़ा डील दिखाते हो, आप ये भी कर सकते थे कि वहाँ पे चुनाव इस तरह से लड़े कि कांग्रेस को फायदा हो, क्योंकि आप लोग कहते रहे कि हमारा मकसद है बीजेपी को हटाना। देखिए, हमने, जैसा मैंने कहा, भरपूर प्रयास किया था कि अलायंस हो जाए। अब हम भी एक राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हम भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बातचीत की कोशिश की, हमारी बातचीत हुई, आम आदमी पार्टी को सीटें ऑफर भी की गई। हालांकि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से कभी अलायंस को लेकर बात नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी से बात हुई थी, बात नहीं बनी। देखिए, ये बेहद दुखद बयान है जो उन्होंने दिया है, अनफॉर्चुनेट बयान है, क्योंकि हम सब ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कितना प्रयास किया, और हम सब ने देखा कि हुड्डा जी ने ड्यूरिंग अलायंस टॉक्स, बिफोर अलायंस टॉक्स, आम आदमी पार्टी को लेकर कितने आपत्तिजनक बयान दिए थे। आगे अब क्या चुनाव है, तो जब गठबंधन की चर्चा चल रही थी, ये भी बात थी कि हो सकता है दिल्ली में गठबंधन कर ले आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो क्या इसके रास्ते खुले हैं या बंद हो गए? हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है, और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। लगातार बात भी कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा पे आपने निशाना साधा है। ऐसी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली में कैंपेन करेंगे, तो अगर उस स्थिति में आपको लगता हो कि बीजेपी नुकसान पहुंचा सकती है? एक सेकंड 8 सेकंड हाँ चलो 8 सेकंड हाँ ना ये क्यों हाँ लेकिन आप इट्स नॉट माई फर्स्ट रिएक्शन। आप लोग करें नीचे, करें आप सब नीचे, ठीक है? चलिए, अब ऊपर नहीं करना, ऊपर करोगे मैं वापस चला जाऊंगा। It's not my first reaction, it's probably my 5th reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They've made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility
of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached National Conference so far, and when do you expect the आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है, और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे. So when do we expect the government formation? How many First and foremost, wait for the Legislative Party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the Legislative Party meeting, there will obviously be the Alliance meeting. It will determine the leader of the Alliance. The leader of the Alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly, and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. But if you become the chief minister, what would be your If top and but, priority? I don't, when? you know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government, or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming Look, days? you can't form a government without meeting the LG. So when are you Whoever planning? has to stake claim will have to meet the LG. So when are you अगर बिना planning? LG से मुलाकात किए हुए यहाँ हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती. तो पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे. अब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है. मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. वो लोगों को धोखा देने के बराबर है. हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे.
ये मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। ओके। देखिए, जैसा हमने कहा कि हम भी एक राजनीतिक दल है, हमारा पूरा राइट है डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़ने का। वैसे ही राहुल गांधी जी भी मोस्ट वेलकम है दिल्ली में, उनका भी डेमोक्रेटिक राइट है दिल्ली में चुनाव लड़ने का। कल प्रधानमंत्री